गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ नेचुरल कैटास्ट्रॉफे रिस्क्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो शार्प राइज देख रहा है इकोनॉमिक लॉसेस के कंटेक्स्ट में ड्यू टू नेचुरल कैटास्ट्रॉफे। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से कंट्री जो है वल्नरेबल भी बहुत ज़्यादा है। तो 2023 में हमने नेचुरल डिज़ास्टर से लगभग $12 बिलियन के इकोनॉमिक लॉसेस सफ़र किए हैं, जो कि एक एवरेज $8 बिलियन के जो लॉसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 2023 में नदर्न इंडिया में और सिक्किम में फ्लड्स आए, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन आए। ठीक है, उसकी वजह से हमें जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस सफ़र करने पड़े हैं। तो इंडिया की जो यूनिक वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी मेंशन की गई हैं रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि फ्लड सबसे ज़्यादा जो है 63% मतलब एनुअल इकोनॉमिक लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। सिवियर फ्लडिंग हमें समर मानसून में सीज़न में देखने को मिलती है। फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून में जो चेन्नई जैसे रीजन्स में फ्लड्स आ जाता है। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है स्टेट्स हैं, वहाँ पर 36.8% इंडिया की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये फ्लड्स और साइक्लोन्स को बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं। अब अर्थक्वेक के भी हम कंटेक्स में देखें तो अर्बन सेंटर जैसे दिल्ली और अहमदाबाद हैं, वहाँ पर सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक hazards देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉसेस के बावजूद भी इंश्योरेंस जो है वो अभी तक उसकी पेनिट्रेशन फैली नहीं है। तो अंडर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इशू बन के आया सामने। 90% जो हाउस होल्ड्स या बिजनेसेस हैं वो अंडर या फिर अनइंश्योर्ड हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि जो रीजन्स जो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन हैं उनको मिटिगेशन मेजर्स अपनाने की ज़रूरत है। फिर एडवांस मॉडल्स एम्प्लॉय करने चाहिए हमें, ताकि जो है रिस्क अक्यूमुलेशन और पोटेंशियल एक्सपोजर को असेस किया जा सके। रीसेंट और डिटेल्ड डेटा के थ्रू एक्यूरेट एवेल्यूशंस की जा सके। ठीक है, री इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को ऐसे डिज़ाइन करो और अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेजेस दो, ताकि हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस जो हैं वो अपने रिस्क को कवर कर सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है उसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ये जो बोर्ड है लीडरशिप देगा ये टर्मरिक रिलेटेड मैटर्स पर, और फैसिलिटेट करेगा ग्रेटर कोऑर्डिनेशन विद स्पाइसेस बोर्ड और बाकी की गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। इसके कॉम्पोजिशन क्या है? एक चेयरपर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेक्रेटरी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है अपॉइंट करेंगे, फिर मेंबर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स से, एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर से, कॉमर्स और इंडस्ट्री से जो है वो इसमें मेंबर्स होंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दो दो टॉप टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट्स के, महाराष्ट्र और तेलंगाना के, वो भी इसमें ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये बोर्ड फोकस करेगा की एरियाज़ पर, जैसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन टर्मरिक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और ये वर्क करेगा इम्प्रूव करने के लिए टर्मरिक यील्ड। इसका हेडक्वार्टर निज़ामाबाद तेलंगाना में जो है लोकेटेड होगा। जो स्टेटस है टर्मरिक का इंडिया में, उसको हम देखें तो हम टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है ओवर 70% ऑफ वर्ल्ड की टर्मरिक प्रोडक्शन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो टर्मरिक के इंडिया में है वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स जो इंडियन टर्मरिक की हैं वो है बांग्लादेश, यूएई, यूएसए और मलेशिया। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ डेवलप करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर टीएचसी कम्युनिकेशन फ्रंट एंड्स, जो कि 6G में हमें काम आएंगे अंडर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है क्या? इसको यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के अंदर सेटअप किया गया, ताकि प्रमोट किया जा सके इकोसिस्टम जो कि रिसर्च, डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, टेस्टिंग, इन सब के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में इसका एम है R&D को फंड करना रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, टेक्नोलॉजी ओनरशिप को प्रमोट करना। कौन सी इंडियन एंटिटीज़ जो हैं वो सपोर्ट ले सकती हैं इस फंड से? डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं जो टेलीकॉम R&D में जो है काम करती हैं, स्टार्टअप्स, MSMEs, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, R&D इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सोसाइटीज़ जो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करती है टेलीकॉम की, उनको सबको इसमें फंडिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू ऑब्जर्वेटरी जो SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने जो है सेटअप की है, जो कि ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर सेटअप किया गया है इसे। तो पुरुलिया ऑब्जर्वेटरी जो है लोकेटेड है पेंशेट हिल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। ये इक्विप्ड है विद
14 इंच डायमीटर टेलीस्कोप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये ऑब्जर्वेटरी 600 मीटर अबव ग्राउंड लेवल पर लोकेटेड है। ये एक मेजर ऑब्जर्वेटरी होगी, नॉट जस्ट इन ईस्टर्न इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये हेल्प करेगी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के ट्रेनिंग इन स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी हैंडल करने के लिए टेलीस्कोप्स को और रिकॉर्ड करने के लिए डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भार्गव भार्गव वस्त्र। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है भार्गव अस्त्र, जो कि फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम है डिज़ाइन करने के लिए ताकि काउंटर किया जा सके स्वॉर्म ड्रोन्स को। तो भार्गव अस्त्र क्या है? इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो डिज़ाइन करता है थ्रेट, जो डिज़ाइन किया गया है तो स्वॉर्म ड्रोन्स को के थ्रेट को डील करने के लिए। इसको डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा। ये क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर, और ये टारगेट्स को हिट कर सकता है 2.5 किलोमीटर के जो है रेडियस में। और ये केपेबल है डिटेक्ट करने के लिए इवन स्मॉल इनकमिंग फ्लाइंग मशीन्स एट ओवर 6 किलोमीटर, और ये उनको टेक डाउन कर सकता है यूजिंग माइक्रो म्यूनिशंस, ठीक है। ये सिस्टम साइमल्टेनियसली फायर कर सकता है मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स। ये डिज़ाइन किया गया है ऑपरेट करने के लिए सभी टेरेन्स में इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ये पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो यूज़ करता है माइक्रो मिसाइल्स, ठीक है। तो स्वॉर्म ड्रोन्स क्या होते हैं? स्मार्ट वॉर फाइटिंग अरे ऑफ रिकन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं कम से कम 3 या फिर उससे लगभग 1000 तक ड्रोन्स, ताकि वो मिशंस कोऑपरेटिवली परफॉर्म कर सकें मिनिमम या फिर लिमिटेड ह्यूमन अटेंशन और कंट्रोल के साथ। ड्रोन स्वॉर्म जो है वो बहुत एफिशिएंट और रॉबस्ट होते हैं, और ये पैरेलली बिना ह्यूमन सुपरविजन के अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल मेथड्स का यूज़ करते हुए ये प्री प्रोग्राम मिशंस पर जाते हैं, और एक ग्राउंड स्टेशन जो सेंट्रलाइज कंट्रोल पे होता है वहाँ से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है स्पेसिफाइड प्री डिटर्मिन्ड फ्लाइट के थ्रू, ये फ्लाइट पाथ के थ्रू ये फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ॉम्बी डियर डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेडली और इनक्यूरेबल ज़ॉम्बी डियर डिसीज़ जो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकती है। इसको क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज़ भी कहते हैं। एक प्रोग्रेसिव फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जो प्राइमरीली डियर, एल्क, मूस और डियर को अफेक्ट करती है। इसको जो है ये कॉज होती है इन्फेक्शियस प्रोटीन से जिनको हम प्रायंस कहते हैं। ये अल्टीमेटली लीड करती है ब्रेन डैमेज करती है, सिवियर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन ये करती है। इसके जो ये हाईली कंटेजियस रहती है, स्प्रेड होती है बहुत ही तेज़ी से बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन के थ्रू, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब 18 से 24 महीने के लगभग का है। मोस्ट ऑब्वियस साइन जो है इसका वो होता है प्रोग्रेसिव वेट लॉस। न्यूमरस बायोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं इसमें। डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, अवेयरनेस कम हो जाती है, लॉस ऑफ फेयर हो जाता है ह्यूमंस में, इंक्रीज ड्रिंकिंग, यूरिनेशन, एक्सेसिव सेलिब्रेशन। और ये इन्फेक्टेड एनिमल्स में तो हमेशा फेटल ही रहती है, कोई वैक्सीन और ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। अभी तक कोई भी कंफर्म्ड केस जो है वो ह्यूमन ट्रांसमिशन का नहीं आया है, लेकिन फिर भी कॉशियस रहना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 100 ट्राइबल पर्सन जो पुलिकाट रीजन के हैं वो इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं पर्ल स्पॉट कल्चर की, क्रैब फ्लैटनिंग, क्लाउन फिश एक्वा कल्चर की, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज करा रहा है उन्हें। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज एस्टैब्लिश किया गया दिसंबर 1983 में इलाहाबाद में अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ताकि रिसर्च की जा सके कंजर्वेशन ऑफ फिश जर्म प्लाज्म में। ब्यूरो का जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1999 में। ये काम करता है आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट और कंजर्व करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ फिश स्पीशीज़, ठीक है। डेटाबेस डेवलपमेंट करना, जीनोटाइपिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना एक्वाटिक जर्म प्लाज्म की, जीन बैंकिंग की, एवेल्युएशन करना एंडेंजर्ड और एक्जॉटिक फिश स्पीशीज़ की, ये सब इसके इंपॉर्टेंट रोल हैं। अब एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी के ऑर्गेनिजम्स की प्रोपिगेशन और हस्बेंड्री करना। ये फिर 500 BC से किया जा रहा है। मरीन और फ्रेश वाटर दो तरह के होते हैं एक्वाकल्चर। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है ये वर्ल्ड में। एक्वाकल्चर लगभग हाफ ऑफ ऑल सी फूड जो कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन से वो सप्लाई करता है। चाइना जो है वो टॉप पर है इसमें, 60% जो फार्म्ड सी फूड है वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है। बाकी इंडिया
इंडोनेशिया और वियतनाम भी इसमें लीडर्स हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's natural catastrophe risks. This topic is important for your environment and economy section. So India has witnessed a sharp rise in economic losses due to natural catastrophes, reflecting both the increasing frequency of extreme weather events and the country's vulnerabilities. So in 2023, natural disasters have caused an estimated $12 billion in economic losses, and it has significantly exceeded the annual average of $8 billion over the past decade. So in 2023, we saw floods in northern India and Sikkim. We also saw tropical cyclones Biparjoy and Michong. So India is uniquely placed in terms of environmental vulnerabilities or climate vulnerabilities. So floods account for almost 63% of annual economic losses. So we saw summer monsoon floods during that period, northeast monsoon floods also. States like Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu, they are highly industrialized, but they are very prone to floods, tropical cyclones, and earthquakes. Urban centers like Delhi and Ahmedabad, they face significant earthquake hazards. So, despite the scale of those economic losses, underinsurance remains a critical issue here. Over 90% of the households and businesses are under or uninsured, leaving them financially vulnerable. So therefore, there is a need to identify regions which are most prone to disasters using granular data. We need to employ advanced models to assess potential exposure and risk accumulation. We need to incorporate recent and detailed data for accurate evaluations. We need to design targeted reinsurance programs and make them very affordable also for households and businesses. Okay. So the next topic is National Turmeric Board. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister for Commerce and Industry has inaugurated the National Turmeric Board in New Delhi, which will provide leadership on turmeric-related matters, and it will also facilitate greater coordination with Spices Board and other government agencies in development and growth of turmeric sector. It will consist of a chairperson who will be appointed by the central government. There will be a secretary to be appointed by the Department of Commerce. There will be members from the Ministry of Ayush, Department of Pharmaceuticals, Agriculture and Farmers Welfare, Commerce and Industry of the Union Government, representatives from the top two turmeric growing states of Maharashtra and Telangana and from the state of Meghalaya will also be on this board by rotation, of course. This board will focus on key areas like research and development, value addition to turmeric products, and it will also work on improving turmeric yield. So its headquarters will be located in Nizamabad, that is in Telangana. So what is the status of turmeric in India? So turmeric is often referred to as the golden spice. It is responsible for over 70% of the world's turmeric production. India is responsible for over 70% of the world's turmeric production, with 30 varieties of turmeric being grown in our country. The largest producing states of turmeric are Maharashtra, Telangana, Karnataka, and Tamil Nadu. And the leading export markets for Indian turmeric are Bangladesh, UAE, USA, and Malaysia. Okay. So the next topic is Telecom Technology Development Fund. This topic is important for your economy section. So the Center for Development of Telematics has signed an agreement with the Indian Institute of Technology Delhi for the development of building blocks for THZ communication front ends for 6G under the Telecom Technology Development Fund, which has been set up under the USOF. It aims to promote the ecosystem for research, design, prototyping, proof of concept testing in the telecommunication field. It aims to fund R&D in rural specific communication technology applications, and it also aims to promote technology ownership. Which are the Indian entities which are eligible for the support from this fund? First is the domestic companies with focus on telecom R&D, startups, MSMEs, academic institutions, R&D institutions which are focusing on telecom research and development are eligible for taking the funds from the scheme. Okay. So the next topic is Purulia Observatory. This topic is important for your economy, for your science and tech section. A new observatory has been set up by the S.N. Bose Center for Basic Sciences in Purulia district of West Bengal. This observatory is located on the Panchet Hill of Purulia district of West Bengal. It is equipped with 14-inch diameter telescope for scientific observations. This observatory is at a height of 600 meters above ground level. It will be a major observatory not only in eastern India but also in the world.
So it will help in scientific observations of astronomical objects, training students in handling telescopes and recording data as well. Okay. So the next topic is Bhargav Astra. Bhargav Astra. This topic is important for your security section. So India has successfully tested the Bhargav Astra, which is the first micro missile system designed to counter the swarm drones. So it is India's first indigenous micro missile system, which has been developed by the Economic Explosive Limited. It can be quickly deployed on a mobile platform and it can hit targets over 2.5 kilometers. It is capable of detecting even small incoming flying machines at over 6 kilometers, and it can take them down using micro munitions which can be guided towards the threat. This system can simultaneously fire more than 64 micro missiles. It is designed to operate in all terrains, and it is the first counter drone system that uses micro missiles. So what does the term SWARM stands for? It stands for Smart War Fighting Array of Reconfigured Modules. So drone swarm technologies coordinate at least three and up to thousands of drones to perform missions cooperatively with limited need for human attention and control. So drone swarms may be more efficient and robust, and these swarms can complete a variety of tasks in parallel with human supervision. They can use various methods of command and control, including pre-programmed missions with specified predetermined flight paths, centralized control by a ground station, or a single control drone. Also, okay. So the next topic is zombie deer disease. This topic is important for your social issues. So, scientists have expressed concern over the possibility of deadly and incurable zombie deer disease, which is affecting humans. So, this disease is also known as chronic wasting disease. It is a progressive and fatal neurological disease which primarily affects deer, elk, moose, and reindeer. It is caused by infectious proteins called prions. It can ultimately lead to brain damage. It results in severe neurological dysfunction also. So CWD prions are highly contagious and they spread through bodily fluids, either by direct contact or environmental contamination. Okay, so it has an extended incubation period which averages about 18 to 24 months between infection and the onset of noticeable signs. The most obvious sign of CWD is progressive weight loss. There are numerous behavioral changes also which are reported, including decreased social interaction, loss of awareness, and loss of fear of humans. Deceased animals also exhibit increased drinking, urination, and excessive salivation. It is almost always fatal in infected in animals, and there is no vaccine or treatment as well. Okay. So far, there has been no confirmed case of CWD transmission in humans. However, experts remain cautious about it. So the next topic is National Bureau of Fish Genetic Resources. This topic is important for your economy section. So around 100 tribal persons of Pulicat region will undergo intense training in pearl spot culture, crab flattening clownfish aquaculture, which is being organized by the National Bureau of Fish Genetic Resources, which was established in December 1983 in Allahabad under the aegis of Indian Council of Agricultural Research to undertake research related to conservation of fish germplasm resources of the country. The Bureau's permanent infrastructure was developed at Lucknow, Uttar Pradesh in 1999. It works to identify, document, and conserve the genetic diversity of fish species. So this bureau has developed modern facilities and it to achieve its mandate related to the database development, genotyping, registration of aquatic germplasm, gene banking, evaluation of endangered and exotic fish species. Okay, so what is aquaculture? It is the propagation and husbandry of aquatic plants, animals, and other organisms. It has been in existence since at least 500 BC. Okay, so there are two main types of aquacultures: marine and freshwater. Aquaculture can happen all over the world in coastal ocean waters, freshwater ponds, and rivers, and even on land in tanks. It is one of the fastest growing forms of food production in the world. And globally, aquaculture already supplies more than half of all seafood which is consumed by humans. China is at the top of global aquaculture production, producing nearly 60% of the farmed seafood. Other leaders also in the world include India, Indonesia, and Vietnam. Okay, so
These were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.